is Surya Namaskar, its importance and precaution. I will start. Uh, Surya Namaskar, steps of Surya Namaskar, and what exactly Surya Namaskar means. In Sanskrit, Surya means sun, and Namaskar means greeting or salutation. You can also say Surya Namaskar is then a greeting to the sun. It's an ancient ritual of 12 steps that warm up the body, preparing it for yoga practice. Surya Namaskar is a practice in itself as well as warming up before performing further yoga asanas. It allows for opening of all the body as it stretches, strengthens, and lengthens all muscle groups. Surya Namaskar or the sun salutation is best practiced early in the morning before sunrise. Surya Namaskar, it's a very systematic technique which combines 12 asanas. Surya Namaskar is one of the most important yoga practices. It's a set of 12 yoga poses, or you can say posture, which can be performed while chanting 12 different mantras. Mantras add up of profound spiritual elements to the practice. Surya Namaskar, or you can say sun salutation, is a yoga warm up routine based on a sequence of gracefully linked asanas. The practice of Surya Namaskar awakens the body intelligence to create energy directly from the sun. Surya Namaskar is designed to access the energy that exists all around us. Every morning at dawn, the air is filled with prana shakti, or you can say life energy. When performing facing east direction during the first rays of the morning sun, breathing correctly and chanting mantras, one experiences a phenomenal effect on the mind, body, and spirit. Surya Namaskar is a, you can say it's a beautiful combination of 12 yogic asana. Just keep in mind that Surya means sun and Namaskar means greeting, or you can say it's salutation. Now, there are 12 asanas, or you can say posture involved in Surya Namaskar. Number one is pranam asana, that is your prayer pose. Second is hasta uttasana, that is raised arm pose. Third one is hasta padasana, that is hand to foot pose. Fourth one is ashwa sanchalanasana, that is equestrian pose. Fifth one is dandasana, that is stick pose. Okay. Fifth one, dandasana, you can also say it chaturanga dandasana, that is your stick pose. Sixth one is Astang Namaskara. Seventh one is Bhujang Asana, or you can say it Cobra pose. Then eighth one is Admukh Savasana, that is downward facing dog pose. Now, just listen carefully. These are the 8 steps. The 9th step is same as the 4th step. The first 4 steps and the last 4 steps are similar. After 8, ninth one is Asva Sanchalan Asana, that is your 4th pose. 10th number is Hasta Padasana, that is your 3rd pose. Hast Uttasana, that is your 2nd one. And the last one is prayer pose, which was your first step in Surya Namaskar. Student, I just want, after I complete my topic, you all please Google Surya Namaskar steps and see the 12 position or posture of Surya Namaskar, that you will be clear about the topic and the posture. Okay, we'll start. Number one is prayer pose. That is pranam asana. This asana is also called the prayer pose and is a gesture of deep respect and greeting. Pranam asana is just like namaste, which is a way of greeting to one another. Now, how to do pranam asana? The first step is stand at the end of your mat.
I guess you must be knowing about the yoga mat. Stand at the end of your mat, keep your feet together, and distribute your weight on both feet equally. Second, open your chest and just relax your shoulder. Breathe in, lift both your arms up from the side. Exhale and bring your palms together in a prayer position in front of your chest. Pranam Asana is the first step of Surya Namaskar yoga step. For this, you need to feel composed and stand on your feet together and balance your weight equally on your feet. Uh, uh, just please check the 12 position of Surya Namaskar so that it will be easy for you to understand the topic. Now, the second one is Hasta Uttasana, that is your raised arm pose. Hasta Uttasana is the second step of Surya Namaskar yoga steps. Number one, stand straight and breathe normally. Keep your body erect. Do the breathing in and raise your arms up. Keep the arms close to your ear all the way and stretch backward. You should stretch the body from your toes to the tips of the finger. Now bend your head a little backward to create a slight curve. Remember, do not bend your knees or elbows. Hastottasana is a raised arm pose that expands the chest and ribcage, thus helping in full intake of oxygen. The third one is Hastapadasana, that is your hand to foot pose. Hastapadasana is the third step of Surya Namaskar. How to do Hastapadasana? Stand straight with feet together and arms alongside the body. Balance your weight equally on both feet. Breathing in, extend your arms overhead. Now bend down by keeping your back straight. Try to touch the floor with your palms. Don't bend your knees and try to touch the knees with your forehead. It would be difficult initially, but it will become easy with time. Exhale and bend down. Exhale completely and touch the floor with your palm. Keep the palm in one position. Uh, Now, the benefits of Hasta Padasana is it stretches all the muscles of the back of the body. Does it increasing the blood supply, makes the spine supple, and tones the abdominal organs. Am I audible? Please just raise your hand. Okay. Now, the fourth posture of Surya Namaskar is Ashwa Sanchalanasana, that is equestrian pose. This name came from Sanskrit horse, Ashwa, which means Ashwa. Horse means Ashwa. And the stepping movement is Sanchalanasana and it means Asan. As Ashwa Sanchalanasana is the fourth step of Surya Namaskar yoga steps. Push your right leg back as far as possible while breathing in. Let the right knee touch the floor and look up. Keep your left leg between your hands. For the best result, keep your foot exactly between the hands. It stretches the lower back hip, and calf muscle, relaxing back muscles, improving balance and creating stability. It improves your lung capacity. It may also help release anxiety, stress, making you feel more energized overall. Now, the fifth step is Dandasana. That is your stick pose. Dandasana, or you can say Chaturanga Dandasana, is the fifth step of Surya Namaskar. How to do Dandasana? First one is step your left and right leg back and form the plank pose. Plank pose, I must
I feel that it must be familiar with the boys must be knowing the plank pose. Step your left and right leg back and form the plank pose, in which our straight body parallel to the ground is supported by the toes and the palms with elbows at a right angle along the body. Dandasana is best to tone up the abdomen and helps to build strength and endurance of arms, shoulders, and wrist. This pose is uh, best to fight diabetes and balance your sugar level. Now, the sixth one is Astang Namaskara. Astang Namaskara is the sixth step of sun salutation of or Surya Namaskar. Again, how to do Astang Namaskara? Number one, form the plank pose and drop your knees to the floor. Raise your hip slightly and keep your chest and chin touching the floor. Keep your side of the hand close to your body and touch the ground with your palm. In this salutation pose, the eighth part of your body, Astang means your eighth part of your body, which includes your two hands, 2 feet, two knees, your chest and chin should touch the ground. Now, what are the benefits of doing Ashtanga Namaskara? It improves the flexibility of the body and posture. It relieves your back pain. It's a great posture and exercise for arm balancing. It helps in keeping mind calm, will provide anger control, and many more benefits. Now, the seventh one is Bhujang Asan. You can also say it as Cobra pose. In Sanskrit language, the word Bhujang means snake. In Sanskrit, the word Bhujanga means snake and Asana means pose. Lie down on your belly and touch your chin onto the floor. Keep your hands close to the body with your palms touching the floor and strengthen your legs. While breathing in, gently push forward your chest. Slowly straighten your arms to lift your chest up from the floor. This pose is considered as the best pose to achieve a flat belly as it stretches the abdominal muscles. It also helps to improve blood circulation. Now, the eighth one is Adho Mukha Savasana, that is your downward facing dog pose. It's the eighth step of Surya Namaskar yoga steps. How to do it? Number one, by keeping your chest downward, lift your hip and tailbone upward. Keep the heel touching the ground. Touch the ground with your palms to form an inverted V shape. Best for blood circulation, calming down the nerves, and relieving stress. If anyone having back pain, headache, they must perform this step. Now, this was the eighth step of Surya Namaskar. Ninth one is Asva Sanchalan Asana, that is same as your fourth step, which is your equestrian pose. I guess you are understanding my point. Anyone, please just raise your hand if you're understanding my point. The first four position or posture and the last four posture are similar. Okay, thank you. Asva Sanchalan Asana, in this, it's the fourth step of Surya Namaskar yoga step. Uh, Earlier, I have told that push your right leg back, but when it comes in your ninth position, your left leg will be back as far as possible while breathing in, and after that, your left knee should touch the floor and you will look up. But in case of fourth step, your right leg was back and your right knee was touching the floor. In similar, it will change to your left leg. Now, Hasta Padasana is your third step.
in which stand straight with feet together and arms alongside the body. Balance your weight equally on both feet. Breathing in, extend your arms overhead. Now bend down by keeping your back straight. Try to touch the floor with your palms. Don't bend your knees and try to touch the knees with your forehead. Exhale and bend down. Exhale completely and touch the floor with your palm. Keep the palm in one position. I will explain it in Hindi also. Now, the 11th posture is Hasta Uttasana, which is your second posture of Surya Namaskar. In this, you have to stand straight, breathe normally, keep your body erect, do the breathing in, and raise your arms up. Keep the arms close to your ear all the way and stretch backward. You should stretch the body from your toes to the tips of the fingers. Now bend your head a little backward. Now bend your head a little backward to create a slight curve. Remember, do not bend your knees or elbows. Hastottasana is a raised arm pose that expands your chest and your rib cage, thus helping in full intake of your oxygen. And the last and the first posture of Surya Namaskar are similar. Prayer pose, Pranam Asana. In this, you need to stand at the end of your mat, your yoga mat. Keep your feet together and distribute your weight on both feet equally. Open your chest and just relax your shoulder. Breathe in, lift both your arms up from the side. Exhale and bring your palms together in a prayer position in front of your chest. In this, you have to put your palms together in front of your chest in a prayer position while you exhale the air. Now, okay, I'll explain it in Hindi also. संस्कृत का में सूर्य का अर्थ है सूर्य और नमस्कार का अर्थ है अभिवादन. सूर्य नमस्कार सूर्य को नमस्कार करना होता है. सूर्य नमस्कार अपने आप में एक अभ्यास है और साथ ही आगे योग आसन करने से पहले वार्म अप भी आप कह सकते हैं. यह शरीर को खोलने की अनुमति देता है क्योंकि यह सभी मांसपेशीय समूह को फैलाता है, मजबूत करता है और लंबा करता है. सूर्य नमस्कार का अभ्यास सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले किया जाता है. यह एक बहुत व्यवस्थित तकनीक है जो 12 आसनों को जोड़ती है. सूर्य नमस्कार सबसे महत्वपूर्ण योग अभ्यासों में से एक है. ये 12 योग मुद्राओं का समूह है जिसे 12 अलग-अलग मंत्रों का जाप करते हुए किया जा सकता है. सूर्य नमस्कार एक योग वार्म अप रूटीन है जो सुंदर ढंग से जुड़े आसनों के अनुक्रम पर आधारित है. सूर्य नमस्कार का अभ्यास सीधे सूर्य की ऊर्जा पैदा करने के लिए शरीर की बुद्धि को जागृत करता है. सूर्य नमस्कार को हमारे चारों ओर मौजूद ऊर्जा तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है. हर सुबह भोर से हवा प्राप्त शक्ति या जीवन ऊर्जा से भर जाता है. जब सुबह की पहली किरण के दौरान पूर्व की ओर मुंह करके सही ढंग से सांस लेने हुए और मंत्रों का जाप करते हुए प्रदर्शन किया जाता है तो व्यक्ति मन, शरीर और आत्मा पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है या वो अनुभव करता है. नो द फर्स्ट स्टेप दैट इज योर प्रणाम आसन. इस आसन को प्रणाम की प्रार्थना की मुद्रा भी कहा जाता है. यह एक गहरा सम्मान और अभिवादन है. प्रणाम आसन नमस्ते की तरह ही है जो अभिवादन का एक तरीका है. नाउ स्टेप्स. प्रणाम आसन सूर्य नमस्कार योग चरणों का पहला चरण है. शांत महसूस करें और अपने पैरों पर एक साथ खड़े हो जाए और अपने वजन को अपने पैरों पर सामान्य रूप से संतुलित करें. अपनी चटाई मतलब आपकी योगा मैट के किनारे आप खड़े होकर अपने कंधे को आराम दें और अपनी छाती का विस्तार करें. फिर सांस ले मीन्स इनहेलेशन एंड अपने हाथों को एक साथ साइड से उठाए. जब आप सांस छोड़े एक्सहेलेशन
तो अपनी हथेलियों को अपनी छाती के सामने प्रार्थना की मुद्रा में रखे। नाउ हस्त उत्तासना, रेज्ड आर्म पोज। हस्त उत्तासन सूर्य नमस्कार योग चरणों का दूसरा चरण है। श्वास अंदर ले और हाथों को ऊपर उठाए। बाजुओं को पूरे अपने कानों के पास रखे और पीछे की ओर खींचे। सीधा खड़े हो जाए और सामान्य रूप से सांस ले। अपने शरीर को सीधा रखे। अब गहरी सांस लेते हुए हाथों को सूर्य को प्रणाम करने के लिए हाथों को सिर के ऊपर से उठाए और थोड़ा सा कर्व बनाने के लिए अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाए। याद रखें, आप अपने घुटनों या कोहनियों को मोड़े नहीं। Now the third one is Hasta Padasana, that is your hand to foot pose. हस्त पदासन सूर्य नमस्कार का तीसरा चरण है। पैरों को ये कैसे किया जाता है? पैरों को एक साथ मिलाकर और हाथों को शरीर के साथ रखते हुए सीधा खड़े हो जाए। अपना वजन दोनों पैरों पर सामान्य रूप से संतुलित करें। श्वास लेते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर फैलाएं। अब अपनी पीठ को सीधा रखते हुए नीचे झुके और अपनी हथेलियों से फर्श को छूने की कोशिश करें। अपने घुटनों को ना मोड़े और अपने माथे से घुटनों को छूने की कोशिश करें। सांस छोड़े और नीचे झुके और पूरी तरह से सांस छोड़े और अपनी हथेली से फर्श को छुए और हथेली को एक ही स्थिति में रखे। इसके बेनिफिट्स है, शरीर के पिछले हिस्से को सभी मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है। रक्त की आपूर्ति में वृद्धि होती है। रीढ़ को लचीला बनाता है और पेट के अंगों को टोन करता है। Now, the fourth one is Asva Sanchalanasana, that is your equestrian pose. अश्व संचालनासन इसे आप घोड़सवारी मुद्रा सूर्य नमस्कार योग चरण का चौथा चरण है, या आप इसे घोड़सवारी मुद्रा भी कह सकते हो। कैसे किया जाता है? सांस अंदर लेते हुए अपने दाहिने पैर को जहां तक हो सके पीछे की ओर धकेले। दाहिने घुटने को फर्श से छूने दे और ऊपर देखे। अपने पैर को अपने हाथों के बीच रखे। सर्वोत्तम परिणाम के लिए अपने पैर को हाथों के बीच में ही रखे। इससे क्या होगा कि आपकी पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है, संतुलन में सुधार और स्थिरता बनाता है, फेफड़ों की क्षमता में सुधार लाता है। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद आप सब प्लीज एक बार सूर्य नमस्कार के स्टेप्स को जरूर देखना। नाउ फिफ्थ वन इज दंडासन, दैट इज योर स्टिक पोज। दंडासन सूर्य नमस्कार का पांचवा चरण है। अपने बाएं और दाएं पैर को पीछे ले जाए और प्लैंक पोज बनाए। प्लैंक पोज जिसमें जमीन के समांतर एक सीधा शरीर पैर की उंगलियों और हथेलियों द्वारा कोहनी के साथ शरीर के साथ समकोण पर टिका होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसमें जमीन के समांतर एक सीधा शरीर पैर की उंगलियों और हथेलियों द्वारा कोहनी के साथ शरीर के साथ समकोण पर टिका होता है। दंडासन पेट को टोन करने के लिए सबसे अच्छा है और बाहों, कंधों और कलाई की ताकत और सहन शक्ति बनाने में मदद करता है। यह मुद्रा मधुमेह से लड़ने और शुगर के को संतुलित करने के लिए भी सर्वोत्तम है। Now, the sixth step is अष्टांग नमस्कार। यह सूर्य नमस्कार का छठा चरण है। प्लैंक मुद्रा बनाएं और अपने घुटनों को जमीन पर टिका दे। अपने कोल्हू को थोड़ा ऊपर उठाए और अपनी छाती और ठुड्डी को फर्श से स्पर्श कराएं। अपने हाथ के हिस्से को अपने शरीर के पास रखें और अपने हथेलियों से जमीन को छुए। इस प्रणाम मुद्रा में आपके शरीर के 8 भाग, जिसमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटने, छाती और ठुड्डी जमीन से लगे हो। इसके बेनिफिट्स है, पीठ दर्द से राहत मिलता है। यह भुजाओं के संतुलन के लिए एक उत्तम आसन और व्यायाम है। यह क्रोध नियंत्रण और दिमागीपन लाभ प्रदान करते हुए दिमाग को शांत रखने में मदद करता है।
Now, the seventh step of Bhujang Asana Cobra pose is, you can also say it as snake and asana pose. Now, अपने पेट के बल लेट जाए और ठुड्डी को फर्श से स्पर्श कराए. ये भुजंग आसन है. अपने पेट के बल लेट जाए और ठुड्डी को फर्श से स्पर्श कराए. अपने हाथों को शरीर के पास रखे और अपनी हथेलियों को फर्श से स्पर्श कराए और अपने पैरों को सीधा कर ले. धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी छाती को फर्श से ऊपर उठाने की कोशिश करें. धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी छाती को फर्श से ऊपर उठाने के लिए अपनी छाती को अपनी बाहों की मदद से ऊपर की ओर कर ले. इस मुद्रा को सपाट पेट प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है, क्योंकि यह पेट की मांसपेशियों को फैलाता है. अधमुख शव आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज. ये सूर्य नमस्कार का योग का 8वां चरण है. अपनी छाती को नीचे की ओर रखते हुए अपने कोहनों और टेल बोन को ऊपर की ओर उठाएं. एड़ी को जमीन से छूते हुए अपनी हथेली से जमीन को छुए ताकि एक उल्टा वी बन पाए. इसके बेनिफिट्स क्या है? रक्त परिसंचारण में सुधार के लिए सबसे अच्छा, नसों को शांत करना और तनाव से राहत देना. अगर किसी को पीठ या सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो यह स्टेप को वो कर सकता है. नाउ अगेन, अश्व संचालन आसन, 9th step. 10th is Hast Padasana, 11th is Hast Uttasana, and the 12th one is prayer pose. Students, again, you have to repeat the 4th pose, which I have already told you. Your 10th pose is your 3rd step. Your 11th pose is your 2nd step. And the last and the 4th step is your prayer pose. Am I clear with the point? Student, please raise your hand if I'm clear with the points. Okay. Now, now, the benefits and, or you can say it, importance of Surya Namaskar. Regular exercise of Surya Namaskar increases your physical and mental energy, along with thoughts and memory also intensifies. Keep in mind these are your benefits and importance of Surya Namaskar. Regular exercise of Surya Namaskar increases your physical and mental energy, along with thoughts and memory also intensified. Blood circulation increases in all organs of the body. It improves your eyesight. Blood flow within the body is accelerated, which gives relief in hypertension disease. Next, the fat of the stomach is reduced. Next, prevention hair loss. It also helpful in controlling your anger. Next, the digestive process is improved. Next, it activates all muscles, organs, and nerves of the body. Next point is practicing Surya Namaskar provides flexibility to the body. It also boosts your immune system. It regulates your hormones. It reduces your stress level. Surya Namaskar also helps to balance the secretion of all the important glands of the body, such as pituitary gland, thyroid, parathyroid, adrenal, liver, pancreas, ovary, etc.
strengthens all the vital function of the body like breathing, blood circulation, excretion, digestion, pulse, and glands. Surya Namaskar plays a very useful role in solving problems associated with indigestion, loss of appetite, constipation, gas. It increases your memory and concentration level also. Now, due to this is the next point. Due to beautiful combination of the variability and repetitive nature of Surya Namaskar, it allows individual to perform self-motivated practice without getting bored or mindless. Adding mantras during the practice removes monotony, providing harmony within and produces soothing vibration that removes fatigues. Surya Namaskar is known to improve your sleeping pattern. Many you must have heard many does not get a good sleep at night, but after you practice Surya Namaskar, it improves your sleeping pattern, your sleeping habit. It helps calms your mind, giving you a better and more peaceful sleep at night. Surya Namaskar helps you maintain an efficient inhalation, सांस लेना and exhalation process, सांस छोड़ना, with the lung capacity getting properly ventilated and blood getting fresh oxygen. Surya Namaskar helps in the smooth running of your digestive system. It increases the blood flow to your digestive tract, ensuring the better functioning of your intestine. Regular practice of Surya Namaskar helps keep your blood sugar level in check. It controls your blood sugar level. It also helps in keeping numerous heart disease at bay. Now, I'll explain it in Hindi. Uh, Blood circulation increases in all organs of the body means शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार बढ़ जाता है. It improves your eyesight. दृष्टि में सुधार. Blood flow within the body is accelerated, which gives relief in hypertension disease. शरीर में रक्त प्रवाह तेज होता है जिससे उच्च रक्तचाप की बीमारी में आराम मिलता है. The fat of the stomach is reduced. पेट की चर्बी कम होती है. Prevention from hair loss and dandruff. बालों का बचाव और उसी से बचाव होता है. It is also helpful in controlling anger. यह क्रोध को नियंत्रण करने में भी सहायक है. The digestive process improves. यह क्रोध को यह पाचन क्रिया में सुधार होता है. It activates all muscles, organs and nerves of the body. ये शरीर के सभी मांसपेशियों के अंगों और नसों को सक्रिय करता है. Practicing Surya Namaskar provides flexibility to the body. सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है. Helps to balance the secretion of all important glands of the body, such as pituitary gland, thyroid, parathyroid, adrenal, liver, pancreas, ovaries, etc. शरीर की सभी महत्वपूर्ण ग्रंथियों के स्राव को संतुलित करने में मदद करता है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड. It strengthens all the vital function of the body like breathing, blood circulation, excretion, digestion, pulse and gland. ये शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों जैसे सांस लेना, रक्त संचारण, पाचन को मजबूत करता है. Plays a very useful role in solving problems associated with indigestion, loss of appetite, constipation, gas. अपच, भूख न लगना, कब्ज, गैस से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत उपयोगी भूमिका निभाता है. Increases memory and concentration. याददाश्त को एकाग्रता बढ़ाता है. It regulates your hormones. हार्मोन को नियंत्रित करता है. Reduce stress level. तनाव के स्तर को कम करता है.
Now, due to beautiful combination of the variability and repetitive nature of Surya Namaskar, it allows individual to perform self-motivated practice without getting bored or mindless. सूर्य नमस्कार की परिवर्तनशीलता और दोहराव वाली प्रकृति के सुंदर संयोजन के कारण यह व्यक्ति को बिना उबे या बिना सोचे समझे स्वयं प्रेरित अभ्यास करने की अनुमति देता है. Now, adding mantras during the practice removes monotony, providing harmony within and produces soothing vibration that removes your fatigues. अभ्यास के दौरान मंत्र जोड़ने से निरसता दूर होती है, भीतर सामंजस्य एकता प्रदान होता है और सुखदायक कंपन पैदा होता है, जो थकान को दूर करता है. Now, Surya Namaskar is known to improve your sleeping pattern. It helps calm your mind, giving you a better and more peaceful sleep at night. सूर्य नमस्कार आपके स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है. ये आपके दिमाग को शांत करने में मदद करता है, जिससे आपको रात में बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण नींद आती है. Surya Namaskar helps you maintain an efficient inhalation and exhalation process with the lung getting properly ventilated and blood getting fresh oxygen. सूर्य नमस्कार आपको एक कुशल सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे फेफड़े ठीक से हवादार हो जाते हैं और रक्त को ताजा ऑक्सीजन मिलती है. Now, Surya Namaskar helps in the smooth running of your digestive system. It increases the blood flow to your digestive tract, ensuring the better functioning of your intestine. सूर्य नमस्कार आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है. यह पाचन तंत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे आपकी आंत की बेहतर कार्यप्रणाली सुरक्षित होती है. Now, regular practice of Surya Namaskar helps keep your body blood sugar level in check. It also helps in keeping numerous heart disease at bay. सूर्य नमस्कार आपके ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में मदद करता है और यह दिल की कई बीमारियों को दूर रखने में भी मदद करता है. Now, what are the precautions of Surya Namaskar? What are the precautions of Surya Namaskar? Number one is there are many, but I'm going to tell you about 6 main points. Number one is suffering from high blood pressure or heart problem will do under guidance. उच्च रक्तचाप या हृदय की समस्या से पीड़ित लोग जो भी इसे करेंगे वो अंडर गाइडेंस करेंगे. जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की इश्यूज है, वो अगर वो सूर्य नमस्कार करते हैं तो उन्हें गाइडेंस के अंदर करना है. A person with hernia, heart problem will not do. जिसे हार्निया की इश्यूज है, दिल की समस्या वाला व्यक्ति है, वो उसे नहीं करेंगे. One with back pain can do it, but under proper guidance. कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति मार्गदर्शन में इसे कर सकते हैं, but with a proper guidance. Do not rush through the posture. Make sure you are doing every posture right. You may not achieve perfection in all posture. आसनों में जल्दबाजी ना करें. सुनिश्चित करें आप हर आसन सही तरीके से कर रहे हैं. हो सकता है कि आप सभी आसनों को निपुणता हासिल ना कर पाओ. Ensure that you are breathing right in every posture. सुनिश्चित करें कि आप हर आसन में सही सांस ले रहे हैं. In सूर्य नमस्कार, proper inhalation and exhalation is very important. Means सांस लेने का तरीका और सांस छोड़ने का तरीका is very important. In some posture, when you're raising hand, you need to inhale. आपको सांस लेना है. When you're bending down, you have to exhale. आपको सांस छोड़ना. This you have to keep in mind. Number 6 is warm up your body by doing joint rotation. Lack of proper warm up results in injuries. Joint rotation करके अपने शरीर को वार्म अप करें और उचित वार्म अप की कमी से चोट लग सकती है. जब भी आप सूर्य नमस्कार करो, before you start up with सूर्य नमस्कार, you need to do a proper warm up. You need to
do all joint rotation. Proper, अगर आप प्रॉपर वार्म अप करते हो तो आपको जितने भी इंजुरीज होने के सब जो भी पॉसिबिलिटीज है वो कम हो सकती हैं. So before you start up with your Surya Namaskar, you need to warm up your body. You need to do all joint rotation, and then you'll start up with Surya Namaskar. Now, Surya Namaskar, you must be thinking हमें कितना बार करना चाहिए? जो as you are the beginner, for first time you should do it 5 to 6 times. Then after some time you should do it 15 to 16 times. In this pattern, you can increase your practicing habit for Surya Namaskar. But student, I again tell you that just to make the point clear, please do check all the 12th position or posture of Surya Namaskar in Google. Do check it. Do check all the Surya Namaskar steps. Just follow what are the steps of Surya Namaskar, and so that it will be easy for you to understand the topic properly. Now, I'll just read once again. Number one is prayer pose, that is your pranamasana. The second one is hastutasana, that is your raised arm pose. Third one is hastapadasana, that is your hand to foot pose. Fourth one is asvasanchalanasana, equestrian pose. Fifth one is chaturanga dandasana, that is your stick pose. Sixth one is astang namaskara, that is your sixth pose. Seventh one is bhujang asana, cobra pose. Eighth one is Adh Mukh Savasana, that is your downward facing dog pose. Ninth one is Asva Sanchalan Asana, that is your ninth pose, your posture of Surya Namaskar. 10th is Hastapadasana. 11th one is Hastotasana. And 12th, the last posture of Surya Namaskar is your prayer pose. I guess you are clear with the points, all the 12 steps. Just please raise your hand if you understood all the 12th point. Okay, I'll just uh, once again I'll read what Surya Namaskar means, and I'll end my topic. Surya Namaskar in Sanskrit, Surya means, just keep in mind, in Sanskrit, Surya means sun, and Namaskar means greeting, or you can say it salutation also. Surya Namaskar is then a greeting to the sun. It's an ancient ritual of 12 steps that warm ups the body, preparing it for yoga practice. Surya Namaskar is a practice in itself as well as a warming up before performing further yoga asana. It allows for opening of the body, and it stretches, strengthens, and lengthens all muscle group. Surya Namaskar or sun salutation is best practiced early in the morning before sunrise. Keep in mind, it's a very systematic technique which combines 12 asana or 12 posture. Surya Namaskar is one of the most important yoga practices. It is the set of 12 yoga poses which can be performed while chanting 12 different mantras. Mantras add a profound spiritual element to the practice. Uh, Surya Namaskar or sun salutation is a yoga warm up routine based on a sequence of gracefully linked asanas. The practice of Surya Namaskar awakens the body intelligence to create energy directly from the sun. You can also say Surya Namaskar is a beautiful combination of 12 yogic asana, and it is designed to access the energy that exists all around us. Every morning at dawn, the air is filled with prana shakti or life energy. When performing facing east during the first rays of the morning sun,
breathing correctly, and chanting mantras, one experiences a phenomenal effect on the minds of the body and spirit. Um, with this, I complete my topic Surya Namaskar. Student, you may all log out.